हम क्यों ड्रग्स करते हैं कि हम अपने इमोशन फीलिंग को चेंज करना चाहते हैं, या ड्रग उन्हीं सर्किट्स पे काम करता है जहां से हम लोग इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम डिप्रेस हैं तो हमें इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या लगता है? कंज्यूम ड्रग। इफ वी आर हैप्पी, इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या लगता है? कंज्यूम ड्रग। सो समवेयर ड्रग्स और इमोशन सेम सर्किट में काम करते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में इमोशन। Accept that this is beyond our control, this is a disease like diabetes, anything, and हमें एक हेल्प की ज़रूरत है। हम कोई जानबूझ के ऐसे नहीं करते, हम जानबूझ के किसी को परेशान नहीं करना चाहते। We intentionally are not bad people, criminal. We have a disease and maybe with treatment we can get better. So I should be open, you should be open for help. And ये है that we say we are guilty, we are sorry, we have to change ourselves, ऐसा बोलते हैं। ये ना सबसे बकवास है जो आपको केवल रिलैप्स की तरफ लेके जा रहा है। बार बार you will end up making same mistake and keep saying the same thing. Please accept that this is like a disease, like diabetes, like hypertension, like heart problem, like cancer. If someone has these, are you going to be sorry, or you will look for a doctor and go for treatment? Relapsing का मतलब बार बार रिलैप्स होगी, प्रोग्रेसिव मतलब धीमे धीमे बढ़ेगी, एंड फेटल मतलब दिस कैन बी कॉज ऑफ योर डेथ। अब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस हाउ यू कैन टेक योर डिसीजन? देयर आर एक्सपर्ट्स हु आर ट्रेन्ड फॉर दिस, and I am just requesting you to take under supervision any decision. Let your doctor decide now. Trust a doctor and follow the instruction. You are not a doctor. If somebody has a, you tell me, if your family member has a cancer and after 3 cycles he says no, I don't want, and doctor suggests 7 cycles, what will you do? You will say no, you stop. You are better now, so you should stop. Somebody has a hypertension, blood pressure, and he is on medication. His BP is perfectly fine, he is doing great. You will tell him you stop medication? If someone has a diabetes, you will tell him to take medication or stop off and on? मेडिकेशन। एक बार तो मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ दैट आप जो सफर कर रहे हो, हम सब लोग जो सफर कर रहे हैं, दैट इज लाइक ए डिजीज, एंड अनलेस अंटिल यू एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट गो ऑन ए राइट पाथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम उस प्रोसेस को रेजिस्ट करते रहते हैं। We keep blaming ourselves. I am sorry, I am wrong, I have done this wrong. Actually, I have done that, so that's why I am like this. He behaved like this, so I am like this. No, boss. It's disease, we need help. Clear? आप लोग समझ रहे हो? Clear है बिल्कुल. It's a crystal clear. It's proven over the time, over last 100 years now. There are clear data, there are PET scans reports which clearly indicate
So Krish has gone through such PET scan. He paid $4,000-5,000 in USA, and there was a clinic. They have done all the scans, and they found out there is something wrong. And in future, maybe we will also have something like that. Sorry, dog. I have to not wrong, but different. Okay, different and need some help. Medicine, yes. Oh. So he need a medicine, and that is proven by a PET scan. Habits and disease is a difference. True. It's a disease. Habit is a story of probability that what are the chances you will be able to manage this in a right way, and what are the chances you will not be able to manage in a right way. And that clearly favors the treatment. You can go and do your own research multiple times. I am simply saying, let's trust your treating team and follow the instructions. I am doing this for last 30 years for thousands and thousands of patients. I am 55. I went to psychiatry in 92. It's been almost 30 years, and every day I see more than 30 to 40 patients. So you can imagine what is the kind of exposure I had. And similarly, there are so many doctors who are well exposed, and they can guide you. There is no force that you take medication, but if you are going off medication, maybe you need a very strict supervision. Very strict, sorry? Supervision. जैसे अगर कोई हाइपरटेंशन वाला पेशेंट कहता है जी मैं दवाई बंद करके देखना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आपको. आई एम ऑन 2 medication for blood pressure. Now I decided that I will try to go off 1 medication, but then I needed a strict supervision, and within 15 days I realized my BP is not getting control. So you should be under the guidance of a doctor, a professional who can help you to go on a process of this. You are not an expert like any other medical disorder. हम क्यों ड्रग्स करते हैं कि हम अपने इमोशन फीलिंग को चेंज करना चाहते हैं. यह ड्रग उन्हीं सर्किट्स पे काम करता है जहां से हम लोग इमोशंस को कंट्रोल करते हैं. मतलब कहीं ना कहीं अगर हम डिप्रेस हैं तो हमें इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या लगता है? कंज्यूम ड्रग. इफ वी आर हैप्पी, इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या लगता है? कंज्यूम ड्रग. सो समवेयर ड्रग्स और इमोशन सेम सर्किट में काम करते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में इमोशन. लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल. ये बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट. सो ब्रेन में प्लेजर पाथवे जो कि डोपामीन ड्रिवन. प्लेजर पाथवे कैसे चलता है? डोपामीन, स्पेसिफिकली D3 बोलते हैं. नाउ ये डोपामीन, अगर आपको प्लेजर मिलता है कोई भी, इट कैन बी ए गुड गर्ल, इट कैन बी ए गुड फ्रेंड, इट कैन बी ए गुड फूड, गुड सेक्स, इट कैन बी एनीथिंग विच इज गिविंग यू ए फीलिंग ऑफ प्लेजर. तो ब्रेन में क्या होगा? रिलीज. नाउ the same thing is done with the help of certain chemicals. Same can be done with the help of antidepressants. Same can be done with the ketamine. Same can be done. These chemicals, I am talking about drugs. Alcohol, cigarette, cocaine,
marijuana, maybe heroin. So, ये सब Joking. Ketamine जो एक sorry ड्रग dog. यूज करते हैं IV. Sorry dog. I was just joking. So ये सब क्या कर रहे हैं? आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज कर रहे हैं. सो आपका प्लेजर पाथवे एक्टिवेट हो सकता. नाउ अब एज आपका ये सब चीजें खत्म हो गई, अब आप समझ में ही नहीं आएगा ब्रेन को कि कैसे रिएक्ट करना है. अब डिप्रेशन हो गया, हाई हो गया. अभी तक ब्रेन कैसे डील कर रहा है? सब्सटेंस के साथ. अब वो तो है नहीं. Now there is no substance. How you are going to deal with this? Medication. Now this is what he is talking as a roller coaster. By understanding how to deal with it without taking. Now it takes 18 months for brain to get back to normal. ब्रेन को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा? 18 महीने. अब इस टाइम में कभी भी आप बोर्डम फील करोगे और आपको बोर्डम से डील करने का सॉल्यूशन क्या पता है? सब्सटेंस. और सब्सटेंस अगर आपको यूज नहीं करना है तो बोर्डम फेस करनी पड़ेगी. और ये कब तक चलने वाली है? For 18 months. Now the biggest problem in the recovery process is this whole thing. आप लोगों को समझ में आ रही है बात? अब हमारे पास डोपामीन रिलीज करने के लिए तो नॉर्मल तरीके हैं. अब नॉर्मल तरीके से डोपामीन जितना रिलीज होता है वो बस 50% तक हो सकता है. वाइल यहां पे तो आप चेक कर सकते हो 150 भी जा सकते हो अपने ब्रेन सर्किट को पुश करके. तो अब आपको फीलिंग ऑफ बोर्डम होगी और आपको हाई की जरूरत है. आप बड़ी कोशिश करोगे परिवार के साथ नॉर्मल चीजों से कि किसी तरह हाई मिल जाए. हाई तो मिले, उतना तो मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो 50% तक ही जा सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं. तो आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करोगे एंड दैट विल लीड टू द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू साइकिल. This whole process will keep repeating again and again. ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं. If you Pardon? if you do the drugs, if you go नहीं. back and relapse. बेटा यूज नहीं है. Your brain is reacted in a certain way. Now, like you have a fracture. Okay? You are not creating any trauma, but it takes 3 to 4 months to heal that. True, false? True. Now, similarly, brain take up to 18 months for its circuits to recover. Now, let me explain you further. ये बात समझ में आ गया सबको? ये है यहाँ पे सब्सटेंस, ये है नॉर्मल फूड, ये है सराउंडिंग, ये है हॉलीडे, ये है सेक्स, ये है अल्कोहल, ये है कोकेन, ये है एम्फेटामिन. ओके. नाउ दिस इज अ डोपामीन का लेवल 2.5, 5, 7.5, 10, 50. Now let's say food, a very good food which you love more than anything, will give you maybe something like this. Maybe
What is this? Surrounding. Surrounding. अगेन थोड़ा सा और मान लेते हैं. सेक्स चलो बहुत हाई मिल गया तो 5-6 मिल गया. अब अल्कोहल बॉस दे रहा है तुम्हें 10, कोकेन दे रहा है 15, एम्फेटामिन तो एकदम स्काई रॉकेट कर दे रहा है ब्रेन को. नाउ दिस वर्सेस दिस, व्हाट इज द डिफरेंस? 10 to 10. ओके, ये मान लेते हैं 5 है वर्सेस 10. अब now somebody who is using this regularly, he get used to of 10 high. Now normal is 5 is normal. Now are you going to be satisfied with 5? No, sir. No. Yes. No, sir. No, never. Because you are used to of 10. Yeah, no. Let's say you are used to of a AC car. Can you sit on a non-AC car of a teacher kind? No, sir. No. No ठीक है? 1,800. You like very smart girl. Can you go with the desi girl? No, sir. भाई मरना हो यार. So ये कुछ ऐसा हो रहा है हमारे brain में. So this is the normal thing does not give us a feeling of high. Then this is known as boredom. Like we all are getting bored here. Why we are getting bored? You are not getting the substance. We are not getting the appropriate part. ठीक है. अब ये जो यहाँ से इसको बोर्डम से ये ब्रेन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में कि दिस इज द राइट हाई, दिस इज नॉट ए हाई, दिस इज एबनॉर्मल. भाई नॉर्मल एवरीवन गेट हाई फ्रॉम हियर ना, यही मिलती है ना नॉर्मल चीजें. नाउ टू हैव दिस ब्रेन की रीसेटिंग विल टेक 18 months. How much time it will take? 1.5 years. 18 months to 3 years. Now during that time you will be extremely bored. तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी? क्या है ये बकवास? Why can't I do something which gives me this high? So आप repeatedly attempt करोगे, try करोगे, and then you will get hooked into it, and you will again will be unwell. So that's why we have the relapse. They don't do any substance. They have never been exposed to this. So you will become and get used to a fight. Like if you see any of your surrounding, क्या होता है? They are comfortable with normal things, na? They are very happy if they have the family, they have a meal together, they watch little movie. They are okay. Or do they need this every day? So boredom की फीलिंग ही खत्म हो जाती है ना. ये boredom नहीं है उनके लिए, ये उनका नॉर्मल है. Normalcy. और जब तुम्हारा नॉर्मल आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा. सो इफ यू सी, देखो टिपिकली आप लोग यहाँ पे आए, व्हेन यू केम हियर दैट बोर्डम वाज मच मोर. ग्रेजुअली यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड देन आप लोगों के मन में बार बार ये आएगा कि हम लोग दोबारा से नशा कर लेते हैं. क्यों कर लेते हैं? बिकॉज हम उसको एक तरीका ढूंढे हुए हैं अपनी फीलिंग्स को चेंज करने के. तो इमोशनल चेंज कैसे होगा? इफ वी टेक द सब्सटेंस एंड वी चेंज आवर फीलिंग्स. सो क्या आप अल्कोहल ड्रग के अलावा कुछ और कर सकते हैं उन फीलिंग्स को चेंज करने के लिए?
Yes, sir. सो वी हैव टू लर्न दोज वेज एंड वो लिखो, लिस्ट बनाओ अपनी कि क्या क्या कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है जब नशा किया तो उससे फीलिंग बेटर हुई या वर्स्ट हुई? रात को बैठना, दिन में महसूस। So, मुझे तो लगता है कि हम लोगों के लिए तो it only got bad to worse. It never improved. Most people who classify alcohol, drugs with the pleasure like sex, food and other joy of living, but then most people are not addicted. One of the warning sign addiction is that we continue to use substance even though each dose bring less pleasure than last. Sometimes we cannot get high at all, but we still keep doing it. तो क्या है, हम लोग को हाई नहीं मिलता है बट फिर भी हम लोग करते रहते हैं। अब ये आपको एक लिस्ट बनानी है कि इन चीजों में आपको हाउ डिड यू ड्रिंकिंग और ड्रगिंग अफेक्ट दिस प्लेजर, एम आई एबल टू एंजॉय प्लेजर व्हाइल क्लीन एंड सोबर। तो ये एक लिस्ट बनानी है आप लोगों को। नाउ चैप्टर नंबर point number 4. After working the checklist above and the pleasure that alcohol drug ruined for you, make a plan to recapture at least one of the pleasure clean and sober. So you have to make the plan to remain clean and enjoy something. Okay. There are pleasure that you would have never indulged because you have been too busy with your drug or alcohol habit. हो सकता है आप ड्रग एंड अल्कोहल हैबिट से बहुत ज्यादा बिजी हो, सो मेक ए प्लान टू एंजॉय समथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर ये पॉइंट नंबर 5, ए फीलिंग चार्ट। ये सारी फीलिंग्स हैं जिनकी लिस्ट दी हुई है। कैचिंग एंड आइडेंटिफाइंग फीलिंग। सो आपने किसी भी मोमेंट में क्या हुआ, अभी तक हमने अपनी सारी फीलिंग्स को नम कर दिया, हमें फील ही नहीं होता है, हमें ना बोर फील होता है ना हाई फील होता है, हम बस अपनी दुनिया में जीते रहते हैं। सो आपको क्लॉक में टिक करना है और फीलिंग्स को कैप्चर करने की कोशिश करनी है।